So what does it take to create a welfare state in a country like Pakistan, which has a population of 220 million people, where poverty is very pervasive? In a country which has severe fiscal space constraints. Where the public sector capacity to deliver well at scale has always been questioned. And where governments have traditionally used social protection as a tool of political patronage. These were some very big questions in front of me when I joined as the Special Assistant to the Prime Minister on Social Protection. So Ehsaas was set in a long-term vision. We called it Ehsaas 2047. This is the 100th anniversary of the country. And it would be a very befitting vision to have social protection for all who need it. The Prime Minister had a vision to create a welfare state, and I was meant to execute that vision. It was a very challenging task. मुश्किल तो गरीब को खाने की चीज़ों में हो रही। आटा महंगा हो गया है, घी आसमान तक पहुंच गई, दालों की अब देख लें क्या कीमत है। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी से उधार भी मांगे ना तो वो मुँह इतने टेढ़ा करता है ना और इतनी बातें सुनाता है, और एहसान जो है ना अलग। गर्मियों में वो फर्श में भी हम सोता था, फिर 2 दिन में इस साइड में दर्द करता था, पहला तीसरा दिन में कमर में दर्द करता था। मेरे शौहर फौत हुआ, मेरे यतीम बच्चे हैं, मैं जे 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10-20,000 रुपये खर्चा होता थी। 5,000 रुपये कर्जा वो तो उसको ब्याज देते थे, 5,000 के उसी में पैरावेर पहुँचते होते थे, बना 2,000-5,000 महीने से महीने टूटते थे, खर्चा ही पूरा नहीं होता थी। और हमारे मामा का बेटा है, उसने BA किया है, MA किया है, वो भी समंदर का काम करता है, वो सामने वाला कश्ती है उसका। जो भी हम कमाते थे आधा वही रख लेता था ना दुकानदार, और आधा ही हमें मिलता था, जो बहुत परेशानी के बायस बनते थे। जो ज़ाहिर है आजकल के महंगाई में
पूरा नहीं कर रहा था हम लोगों को। Before Ehsaas, the government social protection operations were very fragmented at the federal level. They were being operated and operationalized through different institutions that fell under the rubric of different ministries. There was no central coordination. There was a lot of duplication and fragmentation. There were a number of categories of deserving individuals who were outside of the ambit of social protection, which means that there weren't programs tailored to them. Governance of the social protection programs was abysmal. The survey which was used for targeting was 10 years old. The payment system which was used was sole source contracted 10 years previously. So we began with articulating a vision, then we cascaded that vision into a 4-year strategy with clear, time-bound, outcome-based goals. The programs were aligned for different target audiences to meet those goals. We had this huge task of setting up the institutional mechanism. A new ministry was created. We got a governance and integrity policy approved. We created a governance observatory to ascertain how the implementing agencies were delivering on the parameters set within that policy. A tracking mechanism was established. A delivery unit was established because Ehsaas was multi-component. It had a number of different initiatives with multiple implementing agencies, and we needed to get a hang of how things were being implemented on ground. And then we focused attention on building the foundations of Ehsaas. So there was a huge agenda under the Data and Digitization Initiative. There was a Building and Rebuilding Institutions Initiative under which there were multi-pronged reform initiatives aimed at strengthening governance. And because Ehsaas had 16 programs and we wanted to deliver them through one window, there was the One Window Service Delivery Initiative as well. We had to do a lot of spade work to build the digital foundations to execute Ehsaas. Then, of course, there were some key policies which we needed to articulate. The Women and Girls policy, for example, which stipulates that more than 50% of all benefits have to go to women and girls. A very large budget was carved out for Ehsaas. And I'm very pleased to say today that there was 100% utilization of that budget. So all these things, the rollout of the 16 programs, the very aggressive reform, the building of the Data and Digitization Initiative, went hand in hand with the extensive operations that we had to do when COVID struck. So digitization was hardwired into the execution of Ehsaas emergency cash, and we executed for the first time during COVID, when we reached out to 15 million families and disbursed 179 billion cash as a response to the COVID hardships. It was totally hardwired into the design. So individuals were able to send us their national identity card numbers. They were able to SMS us their national identity card numbers on an SMS short code. Once we received those, we would run those through data analytics and survey data. And then the ones that were declared eligible based on a set of policies and procedures that were pre-approved, we would send them an SMS back alerting them about their eligibility status, and then they would go to our camps and banks and payment sites and collect money after biometric verification. And for the first time in the history of the country, emergency aid was given in an impartial manner. It was not given to the cronies of the powerful. It was not given based on political allegiances. And it was not given in a disrespectful manner, because previously the convention was
that emergency aid was given to parliamentarians. They would go to their constituencies and they would preferentially target it largely to their cronies. And this was meant to be a hand down. People had to line up and beg to get assistance. But here people were totally empowered. And to this day, many parliamentarians are deeply resentful because we took away this tool of patronage from their hands and we empowered people. That is not what they want largely. One of the evidences of the impartiality of Ehsaas emergency cash was that 31% of the assistance went to the province of Sindh, where the government was from an opposition political party. Initially, when we had released a video announcing what the execution modalities would be, we had announced that the National Finance Commission award formula will be followed to distribute this cash amongst the various federating entities. That is a formula through which the government distributes its revenues in Pakistan's federal polity. And we had announced in a publicly released video that the monies would be distributed according to that formula. But we overturned that formula in favor of an opposite political party because a lot of people were stranded in a large city which was situated in that province. So this is a proxy indicator of how impartial and how politically neutral the operations of Ehsaas emergency cash were. And through the One Window initiative, we focused on delivery with respect. The beneficiaries needed the best level of care, the best level of service at the point of delivery, and that's where the One Window service delivery architecture comes in. Now, this ecosystem had 4 large pillars. So the first part of the ecosystem was the center itself, the Ehsaas One Window Center. The second part were the front-end digital interfaces, which included the apps and the web interfaces, which provided information to beneficiaries in a consolidated manner. The third part was the data part, because there was the One Window concept around data sharing as well. And then there was the policy, the One Window policy, which facilitated targeting in ways that made the program coherent. Within the center itself, we consolidated all the programs. So all the 4 implementing agencies had their offices there: BISP, Baitul Mal, Pakistan Poverty Alleviation Fund. The different programs had their outreach there. We had registration desks as well. So the Ehsaas registry is meant to be a live registry. So once we completed our static survey of 34 million households, we set up these special registration desks where people could come and update their status. If a household had been missed, they could register themselves. We asked bank branches to open their office there. We had ATMs there installed to facilitate individuals to draw cash. There were point-of-sale machines of partner banks. Ehsaas Nasho-Numa had its operations there. Ehsaas Undergraduate Scholarship had an office there. There was facility for families to enroll students in Ehsaas school stipends there. ठीक है, उस स्कूल से ये फॉर्म फिल करवा के दस्तखत पे नाम भी, मोबाइल नंबर भी लिखवाना है और इसकी एक फोटोकॉपी भी लेके आनी है. There was a
free internet cafe where students wanting to enroll in Ehsaas school stipends could come and enroll themselves. The interest-free loan program had an office there. Ehsaas Tahaffuz had an outpost there. There were some offices dedicated to the disability services. One of Ehsaas's soup kitchen had an outpost there. Nadra had its office over there because in Ehsaas we had a lot of dependency on Nadra in terms of revalidating the fingerprints. The utility stores corporation through which people can redeem their subsidy under Ehsaas Ration Rahat. And what the Ehsaas One Window Center did was to really facilitate the beneficiaries. So previously, if a beneficiary failed on biometrics and on one of the point of sales machine in the bazaar, in the market, they would have to go and revalidate their fingers to the Nadra office. It would take several days. Then they would go to the ATM and test again. And if they would fail again, they would have to send us a complaint, and then the complaint would be registered, and then we would respond to them, and they would have to go to the bank branch again. But now everything is under one roof. This whole process can happen within half an hour. शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे हम आते हैं पैसे लेने, तो ये बात है कि यहाँ पे कोई मसला नहीं होता है. ATM भी है, नादरा वाला दफ्तर भी है, सब कुछ है, हमें सहूलत मिल जाती है, टाइम नहीं ख़राब होता यहाँ पे हमारा. And about 2 months after we opened that, every person on the street knew where the Ehsaas Center was, because this became a rallying point for them to go to seek services. हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये हमारे लिए मदद की है, तो ये कि घर का निज़ाम चल जाता है. शुक्रिया. कमर पे फोड़ा है? अच्छा, क्या उम्र है? 4 माह. आपके क्या करते हैं? आपके घर वाले क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते हैं. गाड़ी चलाते, टैक्सी चलाते हैं? नहीं, कंपनी में. अच्छा, कंपनी में. कितनी तनख्वाह है उनकी? उनकी 14,000. अच्छा. तो ये ऑपरेशन आपके लिए मुश्किल होगा? जी, नहीं अफोर्ड कर सकते थे. हाँ, नहीं, इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा. Ehsaas Tahaffuz was a very important program and one that was closest to my heart. Because all throughout my life, I have seen people being pushed into medical impoverishment, people spending catastrophically on healthcare, foregoing healthcare altogether when they're confronted with a major medical illness. As a doctor, I've seen firsthand women being taken away from hospitals, bedridden for life because families could not afford to pay for their hip operations. Ensuring financial access to healthcare is one of the fundamental responsibilities of the government. It is totally unacceptable to have individuals spend catastrophically on healthcare and get impoverished in the process or forego healthcare altogether because they don't have the financial means to pay for healthcare. One of the distinguishing features of Ehsaas Tahaffuz was the manner in which it ensured the dignity of the patient. Because normally, the patients have to line up and queue up outside offices, they have to stress that they are eligible, they have to go again and again to offices. But in Ehsaas Tahaffuz, it's the pure click of a button and an SMS on the bedside. And in a lot of the cases, the patient would not know where the money was coming from. And basically, the doctor had the authorization to conduct the treatment within 24 hours. We ended up helping thousands of children who would otherwise needlessly die without the care that they
that they needed at that time for conditions that were totally correctable and conditions which insurance did not cover. So Ehsaas was an instrument that came in at that time, was responsive to the needs of a particular patient, catered to the unique situation in which the surgery had to be conducted and with which the surgeon was very familiar. It allowed the surgeon and the individual to seek care at the click of a button through just an SMS, and it was so responsive that it gave them the response within 24 hours. The records of the patient, the whole dossier was transparently archived. There was a simple sticker put on the file of that patient to signal to the hospital that the assistance for this patient is being sought through a different avenue. तो आपको ये एहसास के सिस्टम में क्या मेन आपको क्या फैसिलिटेशन नज़र आई है? सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटेशन ये है कि ऐसे प्रोसीजर्स थे जो हम यहाँ कर ही नहीं सकते, मतलब इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि हम यहाँ पे करें गवर्नमेंट सेटअप में। अफोर्डेबिलिटी वैसे ही पेशेंट की नहीं होती, तो हम लेप्रोस्कोपिक चीज़ें जो ज़्यादातर जो लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं एहसास प्रोग्राम से। ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा। डिस्पोजेबल्स हैं। टोटली मरीज़ों की हेल्प हुई है, लोगों की हेल्प हुई है। मैंने देखा हुआ था कि लोगों की हेल्प करने में जो टाइम पीरियड का गैप आता है ना, मतलब वहाँ पे एक बंदा जाता है अपना ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करता है, उसको कम से कम 1 हफ़्ता तो लग ही जाता है। उसने फिर अपनी क्लियरेंस करवानी होती थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाता था केस। लेकिन एहसास तहफ़्फ़ुज़ में ये था कि देयर एंड देन आके वो टीम इतनी कमिटेड थी और टीम 24 आवर्स यहाँ प्रेजेंट रहना उन्होंने, और वो फ़ौरन से बेशतर डेटा एनालाइज करते थे और वो कहते थे एहसास तहफ़्फ़ुज़ से ये रजिस्टर्ड है। हमें इतना उसकी हेल्प होती थी कि हम फ़ौरन जो है एलपी से सामान मंगा के मरीज़ को फ़ौरन पहुँचा देते थे। We started very small. We did a pilot intervention in one hospital. We learned how to upscale it in a public sector context. And then before I stepped down, we had mobilized Ehsaas in 16 large public sector hospitals in the country. The plan was to deploy it nationwide and to enable access of any hospital that wanted to get impaneled under Ehsaas. The best part of this program is कि जो poor patients हैं, और पुअर पेशेंट्स सिर्फ वैसे जनरलाइज पुअर पेशेंट्स नहीं, इसका पूरा डाटा है नादरा के थ्रू। हम उससे डाटा एक्सेस करते हैं, उनकी स्कोरिंग होती है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिन वो प्रोवाइड की जाती हैं जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इससे पहले लाइफ टाइम कभी भी नहीं मिलती थी। एक्सपेंसिव मेडिसिन, सर्जरीज़, फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी में हम शंट्स प्रोवाइड करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ऑर्थोपेडिक में प्लेटिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा ल्यूकीमिया के पेशेंट्स जिनके 2-2, 3-3 लाख की मेडिसिन होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उनको हम हर मंथली उनको बुलाकर हम दे रहे होते हैं। ओपीडी कवरेज भी हो रही है, इन वार्ड कवरेज भी हो रही है, और तमाम सब स्पेशलिटीज़ में ये कवरेज हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, वन ऑफ अ यूनिक प्रोग्राम। मैं बहुत क्रिटिक हूँ हमेशा से सिस्टम का, और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं मुझे प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इसमें बीइंग आई फील प्राउड कि मैं इसका पार्ट हूँ। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ग्रेट। जी, मैं एक गरीब औरत हूँ और मैंने मजदूरी करती हूँ, यानी कि काम वगैरह करती हूँ, तो उसके अलावा मैं अपने घर में बच्चों को देखती हूँ। हालांकि आपको पता है, सही बात है, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी से उधार भी मांगे ना तो वो मुँह इतने टेढ़ा करता है ना, और इतनी बातें सुनाता है, और एहसान जो है ना अलग। लेकिन गुजारा तो करना ही है हम लोगों ने, खास करके बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। The government of Pakistan had started a program of unconditional cash transfers to women back in 2008 under the Benazir Income Support Organization, but there were many challenges in that program. So when we designed a new program of unconditional cash transfers under Ehsaas,
we tried to build safeguards to overcome those challenges. To begin with, payments were enabled through biometric ATMs to checkmate the influence of touts and middlemen who extract rents from poor women. We also used wealth profiling data analytics to clean beneficiary lists, so that the misreporting that was inherent to self-reported surveys could be checked. And in this way, more than 850,000 previous recipients of benefits were exited from the program who were either owners of cars or had land or were taxpayers. And more than 150,000 within this list were actually government servants. तो फिर मैंने जाके सर्वे करवाया था, तो फिर 2 महीने के बाद जाके पता किया तो उन्होंने कहा जी आपके पैसे आ गए। जी मुझे 2 साल हो गए, साल हो गए मुझे एहसास प्रोग्राम के पैसे मिलते हुए। पहली दफ़ा मुझे 12,000 रुपये मिला और दूसरी किस्त मुझे वो 14,000 रुपये मिली है। We increasingly use technology to promote transparency and accountability in a variety of different ways. Business intelligence tools were used as a routine in review meetings to pick aberrations in payments and inconsistencies. Fraud alert dashboards were installed which enabled us to act in real time to take remedial action. We institutionalized cybercrime surveillance. They were transparency-centered dashboards showing exactly where money was going. We took many regulatory measures. We strengthened compliance as far as the role of partner banks was concerned. And to empower women, we gave them savings wallets under the Ehsaas One Woman, One Bank Account policy and the Ehsaas Financial Inclusion Strategy, so that they could save. ये जो पैसे हैं ना एहसास कफालत के, ये मेरे अलावा और कोई भी नहीं ले सकता, इसलिए कि जब तक मेरा अंगूठा नहीं लगता उसके अलावा यानी कि पैसे नहीं मिलेगा। चाहे मेरा खामन जाए या मेरे बच्चे जाएं तब इनको नहीं मिल सकते, ये जिसके नाम पे उसी को मिलेंगे। And we also expanded the program horizontally and vertically, and for many categories of individuals the program was made universal, such as those affected by a disaster or conflict, or the marginalized segments such as the transgender. And most importantly, we completed a new socioeconomic registry for 34 million households by conducting Asia's first end-to-end digital house-to-house census-like socioeconomic survey. So the unconditional cash transfer program that we ran under the Ehsaas umbrella was very different in many different aspects from the program that ran previously. मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल जो वक्त था वो ये बच्चा है मेरा। ये मेरा बच्चा माजूर है, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, और इसको तो ऐसे झटके वगैरह लगते हैं। और यकीन जाने कि मैं बल्कि उसी दिन लेके आई थी पैसे और ये उस दिन बीमार हो गया। बस अल्लाह के काम है, ये बीमार हो गया और मैंने यकीन जाने कि मेरे वो कहते हैं खुशी की इंतहा नहीं, कि मैंने कहा कि शुक्र है कि चलो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे कि मैं इसको जाके डॉक्टर के पास ले गई। मैंने आपको पता कि ज़ाहिर बात है कोई भी किसी से मांगते किसी ने नहीं दिया, और गरीब लोगों को तो वैसे कोई नहीं देता कि नहीं जी ये वापस कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। और मैंने उस दिन यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा इस पर एहसास को फैलत प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा ना एहसास हुआ कि शुक्र है मेरे पास थे, जो मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई। So there are more than about 1.2 million street hawkers in the country. And street hawkers have literally been this blind spot of our government. They work in a completely unregulated, unprotected environment. Very few of them have licenses. I would say less than 0.1% have licenses. अब ये अगर आप इकोनॉमी का साइज़ लगाएं कि जितनी ये मतलब जनरेट कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर की इकोनॉमी है। And they work in a very predatory environment where illegal rents are sought from them, where they are repeatedly subject to abuse and exploitation. So Ehsaas Ready Ban was meant not just as a program to promote livelihoods for these individuals, but also to give them protection and to protect them from predatory elements. यहाँ पे हम 5 साल से काम कर रहे हैं। पहले हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सीढ़ियाँ वगैरह आती थी, सामान उठा लेती थी, काफ़ी दिन हफ्ता 10 दिन बेरोज़गार बैठे रहते थे। सीढ़ियाँ वाले बहुत तंग करा था, पुलिस पे तंग करा था, गर्मी सर्दी धूप, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ आती थी। दुकान क्या कि जब हम रेडी लगाते तो कम से कम किराया 15,000 रुपये किराया देना पड़ता है।
तो उसमें जो पहला हमारा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट था G11 मरकज़ के अंदर। तो उसमें से हमने 25 लोगों को सिलेक्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उस प्रोग्राम को आप देखें तो इम्पटस मिली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनकी तरफ से वो खुद गए विज़िट करने के लिए और उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया कि ये वाला जो है प्रोग्राम जो है ये आपको एक्सपेंड करना चाहिए। और फिर हमने इसे एक्सपेंड किया अगले 4 और सेक्टर्स के अंदर। तकरीबन 225 रेडियाँ जो हैं मतलब है कि वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं। शुरू में हमने इवन फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स भी उनके लिए करवाई। 2 माइक्रो फाइनेंस बैंक हमारे पार्टनर हैं जो रेडी बानों को कर्जा देने के लिए रेडी के लिए तैयार हो गए। अब जो रेडी हमने उनको दी है उसकी जो लागत है वो 1,15,000 है। 1,15,000 में अगर देखें वो पूरी मॉड्यूलर है रेडी, जिसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, तो उनका बिजली का मसला जो पावर का मसला वो उसमें इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ है कि वो रेडी पूरी बंद हो जाती है स्टोरेज वगैरह के हिसाब से। उसके ऊपर जो स्टील शीट लगी हुई है वो फूड ग्रेड की स्टील शीट है। रेडी मिली हुई है, ये वैसे भी जदीद तरह है। इसमें सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, पंखा लगा हुआ है। रात को दुकान इधर ही पड़ा होता है, ताला लगा के चले जाते हैं, सुबह फिर 10-11 बजे आके किया खोल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल समझ लो दुकान मिल गया। जो भी हमारी मुश्किल पेश आती है हम एक फ़ोन कॉल करते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। काम और भी आगे जाएगा इंशाल्लाह, सारा पाकिस्तान में होगा, अकेले इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर 4 सब में इंशाल्लाह ये होगा। ये अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है और सीढ़िया का भी रोल है कि नहीं है, पुलिस के भी नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है इसका। चूहे की भी ख़तरा नहीं है सर, चूहे ने खरबूजा में चूहा बहुत खाया था, अब ये ख़तरा नहीं है। मुश्किल तो गरीब को खाने की चीज़ों में हो रही। आटा महंगा हो गया, घी आसमान तक पहुंच गई, दालों की अब देख लें क्या कीमत है। So Ehsaas Ration Right was a program which was put together in, at a fast track pace. The context was that subsequent to COVID, inflation had become one of the greatest worries. The government did not have an instrument to subsidize commodities. And I was given the responsibility to develop a commodity subsidy program. So what got designed was an end-to-end digitized system in which we digitized the government's utility stores. So these are stores that the government owns. And it was quite a feat to deploy hardware, software, do the training, get them up to speed. For the last 40 years or so, they've been running these establishments without any digitization. जब वो आते हैं अपने आईडी कार्ड को हमें अपने एक मैसेज देते हैं जिसमें अपना कोड होता है, वो कोड हम लोग करते हैं। ये नादरा और नेशनल बैंक से इंटीग्रेटेड है, तो वो जब हो जाते हैं वहीं से हमें पता लग जाता है कि इस कस्टमर ये बेनिफिशियरी को अभी इसके पैसे बैंक में पड़े हैं, आप इसको इतना वो दे दें। तो वो बहुत आसान हमारा सिस्टम है और वो इधर से हमसे लेकर चले जाते हैं और बाकायदा उसका रिकॉर्ड रहता है, हम उसको स्लिप भी दे देते हैं और एक स्लिप अपने पास रख लेते हैं। And there was an accelerated process of getting people to register, of getting the merchants to register, of opening their bank accounts. There was a payment settlement mechanism developed. According to estimates, Pakistan has around 1 million grocery stores, large, small, mid-size, small. They don't use any standardized software that we could plug our system into. So we had to develop a mobile point of sale in collaboration with the National Bank of Pakistan. तो ये हमारे पीछे लगे हुए सिस्टम लगे हुए, ये इंटीग्रेटेड है नेशनल बैंक के साथ, नादरा के साथ, तो इसमें कोई भी लूप होल नहीं है। ये लकी जनरल स्टोर का ऑनर हूँ और पेशावर में जहांगीराबाद में, अंदरूनी जहांगीराबाद में ये दुकान है। एहसास राशन के बारे में ये मीडिया पे पता चला था कि ये दुकान अपना एक्टिवेट कर लो, तो पर मैंने अपना दुकान एक्टिवेट कर लिया। वो टेलीविज़न से ख़बरों में हमें पता चला कि राशन रियायत प्रोग्राम जारी होने वाले 8171 पर आप इस मैसेज भेज दें। मैंने मैसेज भेज दिए, फिर मैसेज आया कि भाई आप हकदार हैं और करीबी दुकान से या यूटिलिटी स्टोर से राशन वसूल कर ले। When the government left, we had received 39 million applications. We had
declared 4 million eligible. The process of eligibility ascertainment was ongoing. SMS messages had already been sent to 1 million individuals. They were all set to redeem their subsidy. इधर हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहते हैं कि यार एहसास राशन सौदा दे दो, तो हमने पहले सबसे पहले उसको पूछना है कि आपको मैसेज आया है अहलियत का, तो हम कहते हैं कि यार शनाख्ती कार्ड दे दो। हम इधर ऐप में चेक करते हैं, जो एड होता है तो पर हमसे पूछते हैं कि यार क्या क्या चाहिए आपको, जो उसका पूरा बिल हम बनाते हैं ना, तो उस पर फिर हुकूमत की तरफ से मोबाइल में जो ऐप होता है वो उसको फिर डाल के ना, फिर उससे उसको सब्सिडी कटती है। The mobile phone pairing with the national identity card number was actually fundamental to the veracity of the operation of Ehsaas Ration Riayat. Without that, the program is prone to abuse. और 1200-1300 रुपए का हर महीने में बचत मिल जाती है हमें, इससे हम गरीब लोग बड़े खुश हैं। They would get a 30% discount on flour, on pulses, and on cooking oil, and the government would settle the sum early next morning through the National Bank of Pakistan. ये हम लोग उस सेगमेंट को दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज किया कि जो गरीबों में भी गरीब तरीन तबका, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन लोगों के लिए टारगेट सब्सिडी गवर्नमेंट ने मुख्तस की थी। लोगों को जब पता चलता है कि इधर राशन सब्सिडी रेट पे मिलता है तो हमारा कस्टमर और भी ज़्यादा हो गया। दूसरी बात ये कि हमें हुकूमत की तरफ से वो जो 8% कमीशन आता है वो अलग होता है। It is a disincentive for touts and mafias who get very operational, who really try to game the system when you give cash. So it is absolutely vital that the government stays on course, continues to expand this, and gives incentives for people to operate through the system. इसमें जो मेरे मोहल्ले में है या इस इलाके में है, सब लोगों को मैं जानता हूँ सही हकदार को हक मिल रहा है। Ehsaas has shown that social protection can also act as the tool to build resilience and human capital and economic opportunities. It can be the vehicle to target subsidies, and it can also act as the key policy lever to economically empower women. And as shown by Ehsaas, this also enabled us to usher in a digital transformation within the government system. Ehsaas School Stipends was a very important program for children who would otherwise not go to school, because their families had this comfort that they will get a small stipend which will help them, buy uniform and books and pay for the bus transport. This was critically important at the secondary and the higher secondary level, because a lot of dropout happens after the 5th grade. I met lots of women who wanted their girls to study, but the schools were far from where they lived, and they just could not afford the bus fare. They could not afford, to have the rickshaw come and pick up their girl every day. So the school stipend, it's a small stipend, weighted in favor of the girl child, structured specifically to encourage families to send their girls to school. And it was done to ease that financial access barrier, so that women had this comfort that they could send their girls to school. Otherwise, their girls would just sit at home. They'd marry them off at the age of 15. मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मेरी उम्र 14 साल है, क्लास 7वीं में पढ़ता हूँ, यहाँ नथवाले में रहता हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरी बहन है। उन साजिया 9 साल की उम्र, 2 क्लास में नथवाला। So there were some fundamental differences between Ehsaas Talimi Wazaif
and the earlier program which the government used to run called Wasila Taaleem, there were some important fundamental differences. First of all, in Ehsaas school stipends, the program was end-to-end digitized, and the program spoke to 3 different databases as it processed the application of a child. This wasn't the case previously. Previously, a lot of ghost children ended up getting enrolled in the program. A woman would have 10 children enrolled, and the children of her sister-in-law enrolled into the program also. If you looked at the dates of birth of children, one woman would have a child every 3 months because they weren't the checks and balances in the system. पढ़ाई के शौकीन में कुछ पढ़ूंगा, लिखूंगा तो कुछ बनूंगा, आगे जाकर अपने माँ बाप की कुछ मेहनत में हाथ बटाऊंगा। मुझे इसीलिए पढ़ने का शौक है, मैं अपनी अम्मी अब्बू का काम में हाथ बटाऊं, बड़े होकर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन के इनके शौक पूरा करेंगे। One of the greatest joys was to see what this meant for children, for families, for girls and for boys. It opened up a world for them. जब से हमें स्कॉलरशिप मिली है तब से हमें बहुत अच्छा हुआ है, फायदा हुआ है कि कापी किताब खरीद ली, पेंसिल रबर शार्पनर पेन पेंटर शाई। तो अब कैसा महसूस कैसा होता है? अब बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे अब जबरदस्त। मेरा नाम खालिद शरीफ है, ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट केच तुर्बत, तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक तहसील बुलेदा, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। So the government of Pakistan had been very generously carving out a budget for higher education for the last 2 decades. But that budget was for MPhils and for PhDs. Now, when you look at it from the poverty alleviation angle, it is undergraduate education which has a higher potential to alleviate poverty. So we took a fundamental decision to steer the higher education policy of the government towards undergraduate education as opposed to postgraduate education. And that was a very profound change. We gave them a stipend to cover their hostel fees and the expenses of their books, and we covered undergraduate tuition fees 100%. मैंने तकरीबन 6th तक मैंने वहीं स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मैं बलुस्तान रेजिडेंशल कॉलेज तुर्बत जो डिस्ट्रिक्ट केच में है, हेडक्वार्टर तुर्बत में, वहाँ पर मैंने एपीएससी मैट्रिक दोनों मैंने वही 6 साल वहीं पर गुजारे। मैंने वहीं पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी है और उसके बाद मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अभी तो पढ़ाई मेरी 4th सेमेस्टर इकनॉमिक्स डिग्री में कर रहा हूँ। आगे मेरा इरादा है कमीशन CSS करने का। You know, lots of families live in very remote areas. They have never been to a large town. They have lived in abject poverty for decades, for all their lives, for generations. But they are willing to make that sacrifice and send their child to a faraway place if they find that this means a better future for their child. मेरे वालिद साहब तो एक वैसे बेसिकली किसान हैं और मेरे भाई हैं, वो भी वहाँ पर मतलब जो खजूरों के बाग हैं वहीं पर हम काम करते हैं। मेरे भाइयों को ये शौक़ चढ़ा कि ताकि मैं भी पढ़ूँ, हम नहीं पढ़ सके तो कम से कम मुझे पढ़ा दें। तो मेरे भाइयों ने कोशिश की थी, बेसिकली उनका किरदार ज़्यादा रहा था, तो उन्होंने मुझे बलुस्तान रेजिडेंशल कॉलेज में भेजा था ताकि मैं आगे पढ़ सकूँ। और मैं अपने ख़ानदान में पहला ऐसा स्टूडेंट हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आया, मतलब यूनिवर्सिटी तक पढ़ा था। नहीं सही है। पहली बार कैमरे में फेस करें। हाँ। मेरा नाम सिद्दीक मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ का बेटा हूँ
जो खालिद मेरा भाई है एहसास स्कॉलरशिप से इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए गया। हम फख्र करते हैं इसके पढ़ने का। तो नहीं पढ़ा तो अनपढ़ हो गया। हमको अब कितना तकलीफ़ हो गया कि पढ़ना इंसान के लिए पढ़ाना तो लाजमी है कि हम खुद नहीं पढ़ा, हमको तालीम नहीं हुआ, बच्चा को लाजुम ताल्लुक़ देगा, मजदूरी करेगा, इधर उधर करेगा, भाइयों के पास पैसा उधार लेगा, बच्चों को लाजुम पढ़ाएगा कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगा। इंसान को जब तालीम नहीं होगा तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद है। इंसान को तालीम मांगता है। This program is oversubscribed. We aim to give 200,000 scholarships over 4 years, and at the end of 2 years, we ended up giving 142,000 scholarships to eligible students. It was truly transformative for a laborer's son who would otherwise work with his father in a brick kiln, who would otherwise toil with hard labor. This would open up a whole new world for that person. जो इस प्रोग्राम ने जो जिस चीज़ से मुझे सपोर्ट किया, मैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ मतलब उस ईरान बॉर्डर से मैं यहाँ इस्लामाबाद पहुँचा हूँ तो इस प्रोग्राम की वजह से। पहला हम लोग इधर आता था ना, इधर आके बैठने की जगह भी नहीं मिलता था, खाने की भी रोटी भी नहीं मिलता था। फिर हम लोगों को किसी मस्जिद में बैठा था, किसी या और छप्पर में बैठ के फिर हम गुजार करके जाता था। 1-2 दिन में इस साइड में दर्द करता था, पहला तीसरा दिन में कमर में दर्द करता था। फिर एक बंदे ने बोला था इधर एक पनाहगाह है, लोगों को रोटी खिलाते हैं, उसको बैठने की जगह भी दिया है। इधर आके 2-3 महीना हो गया, पहला आपने नहीं बताया। ये मुँह दिया है, इमरान खान ने गरीबों को दिया है, मजदूरों को दिया है। पहला हमारा जो गरीबी का हालत अभी मेरी का हालत है, हम ये महसूस करते हैं, हम इमरान खान मेहरबानी करते हैं। Informal laborers have also been a blind spot of our society. These are individuals who come from faraway places, places where there isn't much of economic activity. They come to large cosmopolitan towns, they come and earn daily wages, or they get piece rate remuneration, and they're really working on a day-to-day basis, trying to save money to send back to their families. So they really have to cut corners when it comes to their own living and eating and their livelihoods within those cosmopolitan cities. So when the Prime Minister took over, he said that we must build abodes for these men. We must have soup kitchens for them to eat in. And that is how the concept of the Langar Khana, supported by the government, evolved. That is how the concept of the Panaga, which the Prime Minister was so keen about, that is how the Panagas evolved all over the country. There were some that were under the administrative control of my ministry, but there were many others who were under the administrative control of the provincial governments as well. हम अकेला मजदूरी करके दिन को 1000 आता था,
या 500 रुपये होटल में ले गया था, 500 रुपये बचत हो गया था। फिर यार दोस्त हो गया तो फिर नासवार वो कपड़ा छपड़े का साबुन भी नहीं होता था। अभी हमारे वो बचत है। अभी हम अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान की मेहरबानी से हम लोगों का कर्जा नहीं है, जो आते जो खर्चा करते हैं। So the Panagas actually functioned like one-star plus bed and breakfast facilities. These were gated facilities with security, with 24/7 camera surveillance, with a power backup. There was a digital check-in where biometrics of every incoming person would be taken. It was a facility with beds and clean beds for typically 100 individuals in every Panaga. There were self-service meals 7 days a week in multiple shifts. Fully functioning shared bathrooms with hot running water, with laundry and housekeeping, with a mosque, with a recreational area, an ambulance service on call. There were SOPs, housekeeping SOPs for everything, a set menu, procurement mechanisms in place, fully functioning staff. And the funding model was such that every Panaga was able to accept donations as well, whether the core staff and the core operations were funded by the government. And the Prime Minister was very keen on quality, on maintaining quality standards within these facilities. He would always say the poor are voiceless. They're not going to complain no matter what service you give them. So you have to be very conscious about the service that you give to them. हाँ, वो बीवी का भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसका कार्ड की वजह से हम हो गया है। वो बेटी का भी ऑपरेशन हो गया है। वो दूसरा बीमार था, वो दिल की बीमारी था। 15 दिन उधर रखा, फिर उसके कार्ड से बीमारी को ठीक हो गया। हमको पैसे नहीं मिला है, हमको दवाई मिला है। ये काफ़ी है ना, ये दवाई लिया तो हम कम से कम 70-80 हज़ार का हमारा खर्चा था। उसकी मेहरबानी से हमको मुफ्त हो गया। ठीक, हम लोगों का दुआ यही है, हम लोग गरीब बंदे हैं, जो अच्छाई किया है इमरान खान ने, हम इमरान खान के बारे में या हम दुआ करते हैं रोज़ाना। There was an extension of the soup kitchens which were on wheels, and these were also set up on the Prime Minister's direct instructions. There were 40 food trucks that were mobilized in different geographic sites. And these mobile soup kitchens would really come handy during times of disasters because we would mobilize them to the sites immediately. We did that when an earthquake hit in Harnai. We did it again when internally displaced individuals were returning after 12 years, and we were catering to those needs and giving them cash stipends. So the mobile soup kitchens were mobilized during times of disaster. Nimenta pasalita batulin na mihdiawan in na sehlin inde na balbis din yot nimenta fasora darjo mal fraqsumyot ngaina ni melaqot menga chogayjo tera nafarir ngaya tera nafarir aki bemar gendo te bar medal sad miglat senduat يوم بلبس كل كوش نعيه إحنا ساسية بربوط إحنا بكابريت سوما جيل تشتا سوما يا بعدها تجان كم سونا دو رباق بيومات سرك هواته. So there is a background to Ehsaas Nashunama. Before the Prime Minister took over, and he was still the Prime Minister-elect, he made his maiden speech to the nation, and he committed to addressing the issue of stunting of children. This is a grave issue because the surveys tell us that more than 40% of the children are stunted in the country. Now, what does that mean? Stunting
just does not mean that you are physically impaired in terms of your height for age, but that you're also cognitively impaired. And cognitive impairment is a real handicap in today's digital world, where human capital is the real wealth, is the real currency of a nation. So we established a program called Ehsaas. This was a health and nutrition conditional cash transfer program where pregnant and lactating mothers and children up to 2 years of age were meant to receive specialized nutrition food and cash stipends if they complied with consuming that food, and health checkups that went alongside. دسن يدي هراق قلدين أرجل وجو هسبتالين غنتا تشغو تاما جرول غدين أر كالبورت هسبتالين بلبس بالسكان مغنيات نيبك كيتن النسبة ده بينتي بينون ايسي بلبس كل هراق بد شيك ده بهوي كاس هراق برا بد بلبس شيء بسكولن تاسيو طبي بينون زيادة تر ساي هراق زيادة قط نلا كلا لاقبي دولا هنتك باتي بولفيكس دولا كلا أندا شا تفو زيادة هراق من زيادة بينون دين قط كويس مانين يفوفون بيمار قوين دوادون And they used to be shown special videos in their local languages. There was deep engagement with these women by the local staff. There was a lot of community mobilization and the creation of awareness about hand hygiene, about a healthy diet, about breastfeeding. So women really valued the Nasha Namash centers because they would often come from very far, carrying a child, changing many buses, taking taxis. But they saw value in that engagement, in those training sessions, in the specialized nutrition food and the cash they got. So they would make an effort to come to those centers, and they would come after ensuring compliance. They would bring the empty sachets, demonstrate to us that they had consumed the specialized nutrition food, wanted more, and wanted further advice on how to improve the health of their children. فرفون لبحنا الجوعي فرفون لحمو الجو هراق بو فرفون لخارجة بدو فرفون لسمان شو كيان فرفون لبيمبار كيان جو فرفون لكابرا كيان جو فرفون خارجة بتياجو فرفون نانوسا خارجة بتجو. We executed it in 15 districts on a pilot basis. Then we evaluated it, and when our government left, all the arrangements were in place to upscale this program to every district by the end of the year. ये शुरू करके है अभी टोपी मशीनी काम नहीं हो गया तो ये काम करते हैं इस तरह ये लो नज़र भी कम हो गया अभी तो उम्र हो गया ना नज़र कम हो गया 25 साल में सिलाई करते सिलाई कर कर के बस अभी आँखों में नज़र भी कम हो गया दर्द पे है जिस्म में बीमार रहते हैं हमेशा मेरे तकलीफ है So under Ehsaas we had a program called Ehsaas interest-free loans, and this was executed through 22 partner organizations that were brought on board through a competitive selection process. अभी इस उम्र में 60-70 साल मेरे उम्र है इस साल में मैं दर्जी काम करते हैं बनियान वो करते हैं And Pakistan Poverty Alleviation Fund, which was one of the organizations under my ministry, was responsible for executing this program. Partner NGOs did a lot of due diligence to ascertain where individuals had an income generating potential, and then based on that due diligence, these small loans were given, which were often very transformative in terms of expanding their businesses. पहले घर में होती थी हम
फिर हमने बाहर निकल के ये शॉप खोला है। मुझे लगा बाहर निकलना चाहिए, हमें काम करना चाहिए ताकि हेल्प हो सके, बच्चों को भी संभाल सके, अपना भी हो सके। इसलिए बाहर निकल के काम करने से अच्छा होता है और हस्बैंड का वो हेल्प भी हो जाते हैं बच्चों के साथ। फिर उनको पढ़ाना लिखाना, महंगाई का दौर भी है, इसलिए हम निकले थे। एक तो ये इनका बहुत अच्छा है, ये बिला सूद है। थोड़े पैसे जमा हो के मिलते हैं तो सामान भी आ जाते हैं। बाकी हमारे पास इतने जमा नहीं होते, शॉप्स में खर्चा हो जाते, आते हैं खर्चा हो जाते हैं, इसलिए ये सेफ हो के रहते हैं। इसलिए साथ में मिलते हैं तो सामान डालने के लिए हमें बहुत अच्छा होता है। There were thousands of stories around how women would develop small cottage industries in their homes, setting up beauty parlors and catering to local clientele, setting up sewing businesses. Bangles and haberdashery were other small businesses that women would set up with these small loans. पाकिस्तान के औरतों को, सारे बेवा औरतों को मेरे पैगाम है, खुद काम करो, खुद कमाई करो, बस ये है और कुछ नहीं है। मौला मना सब जायल दाद, अल्लाह मना दोस्तायल दाद, मौला मना सब जायल दाद। Ehsaas was a program through which we improved the livelihoods of people who were at the bottom of the pyramid, who were deeply impoverished. And this program ran in 23 most disadvantaged districts of the country. दिल ज़ोरते मनी भरते मना दूर चगल धाते कया तेरा बारे। Ehsaas gave small assets to improve the livelihoods of individuals and to help them lead a better life. तो याद काए मनी दिल जुशी गम तई मनारा बे मौता कुशी मनावा बुने मरचा इतराजे शपा मनूर शाह गिंदा। हमारा नाम रहीम है, हम बालूचवाड़ में रहते हैं, ग्वादर। उम्र 23 साल। समंदर का काम करते हैं। हम सुबह समंदर जाते हैं मछली पकड़ने। एक दिन मछली होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। समंदर का काम ऐसे ही है। हमारा ज़रूरत का जाल है, समंदर हम काम करते हैं, हमको जाल का ज़रूरत होते हैं। जाल अभी इतना महंगा में आ रहे हैं। And the asset could either be a sewing machine or it could either be a fishing net. एहसास प्रोग्राम वाले ने हमको जाल दिया है, इसको शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुश हूँ उसने हमारे को जाल दिया है। हम ये एहसास प्रोग्राम वाले ने हमको जाल नहीं देता है, हम सेठ के पास जाते हैं, पैसे लेते हैं उधर। और सेठ के जाल होते हैं वो कमीशन है 20 रुपया, वो सेठ लेते हैं। हमारा खुद अपना जाल होते हैं वो 20 रुपया हमको मिलते हैं। The assets that we gave through Ehsaas Amdan were a grant, but the interest-free loans was like a cash for work that they had to pay back. So we had these two instruments that were centered on livelihood promotion under the Ehsaas umbrella, part of the Ehsaas National Poverty Graduation Strategy. मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं ग्वादर का हूँ। मैं जो है ना 2 मशीनें मिली जानम की। पहले ये मशीन हमारे पास नहीं थे तो समझो हमने दूसरों की मशीनों पे काम किया, जिसका जितना भी पैसे आते थे आधा वही लेता था दुकानदार
और आधा हमें मिलता था। जबकि बाद में हमें एहसास वालों ने 2 मशीनें दी, समझो हमने अपने घर पे लगाए और हमें काम मिलता गया, हम करते गए। इसमें यह हुआ फ़ायदा कि टोटल पैसे हमारे हो गए। तो बाद में हमने मेहनत तो जारी की अपनी, क्योंकि इस काम में हमारा जो तजुर्बा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते 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 बेहतर होते गए। बाद में अल्लाह ने हमको अपना दुकान दिया, जो हम अपने हिसाब से चला रहे हैं अभी। तो माशाल्लाह मेरी बेगम भी काम करती है, मैं भी करता हूँ, दोनों कारीगर हैं हम लोग। वो लेडीज़ कपड़े बनाती है घर पे, मतलब ये जो मशीनें हैं जानम के बहुत सारे काम करते हैं, मिक्स मशीन है ये। तो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं बलूची पशके में, और उस टप्पे को हम लगाते हैं डिज़ाइन बना के, फिर वो उस पर सिलाई होता है। And we also looked at the local context to ascertain what people needed. So one of the conditionalities in Ehsaas Amdan was that impoverished families had to develop livelihood investment plans, and they had to come forward and tell us what it actually was that they were adept at in terms of income generation, and what it would take for them to enhance that income with a little bit of an investment. एहसास का जो तरीक़ाकार है ये ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह। मतलब एक बंदे को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिसका आमदनी अगर महीने का 15,000 है तो ये सपोर्ट मिल जाए तो 30 हो सकता है। घरिया तो बजाने वरिया तारा बाजा रे, घरिया तो बजा ने वरिया तारा बाजा रे, रामो हरिया हेली घरिया तारा बाजे, रामो रे बाई सा ने वरिया तारा बाजे, अरे घरिया तो बजा। So there were artisans who came forward and told us how with mechanization, with cottage industry level mechanization, they could improve their incomes, and what plans they had to do with that income in terms of feeding their children better, in terms of sending their girls to school, in terms of plowing back that income to further their businesses, and how that would improve their quality of life. मां नालो वॾो आहे, टाबो में रहां थी, सालियां कमु करां था, नाले भरां था सर कोई टाइम। मैं ॿार 10 आई, 8वीं गिरई, 2 छोकिरा। खर्ची तरफ़ा जुड़िया आहियूं 60,000 गुरबत घटाइण लाइ जुड़िया आहियूं। पसंदि ले आया हूँ, मज़दूरी करां था, ये बचत 20,000, 25, 20, 25, 25 हिसाब बचींदा। एहसास प्रोग्राम जी महिरबानी जेको असां अञा दे सुठे नमूने कारोबार हलाऊं पिया। कबीर कह मन पोपट भया जल उड़ चढ़ा आकाश, अरे सरगापुर सुनी देखिए साहिब संतों के पास। सत सडावण बड़ा दुख पावण, मत को सत सडावे, जे कोई सत सडावे वो जीतो ही मर जावे। Under Amdan, we also gave livestock. Livestock was a favorite. क्या? ओ गोले गोलू 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 गोलू।
मेरा नाम है भाई सूजा। हमारे इलाके का ये सरपर करे गोट टाबों में गो ताल को मिट्टी जिलो मिट्टी। मेरे बच्चे 5 बेटे 4 न्याणे है। मैं पढ़ा में ही नहीं हूँ, सारी की मजदूरी कर रहे हूँ। मजदूरी कर करके बड़ी इज्जत सी बेटे के तगारी बड़ी मजदूरी करके बच्चे को पेट पालिया। इस साल प्रोग्राम में मेरी बेगम को 60,000 रुपये अमदाद में मिले। कर्जा को दिया थी वो बिना ब्याज के कर्जा। कहाँ धरती वाला आया था सन कहे गया था 60,000 माल मिल से आवाना। किसी को बकरियां दिया है कर्जे बाद, किसी को मना दुकान का सामान दिया है, किसी को वर्गो या पश्चिम ने ये सालों को सामान दिया है। उसी में मेरे को बकरियां ले आया, उसमें 5 दिया थी, उसके मेरे पास 10-12 बचे है उसको, मतलब 16 बकरियां हुए हैं। अग में सिलेमान चाह पीता है बाढ़ आप सेहत सही खीर पिया धोरो खाऊं हर शह माल करांदा तो खाऊंदा। बिल्कुल सही खुशी है, हम मतलब अपने शकुन में बिल्कुल सही हो भाई। गरीब को मना हुकूमत चाहती है तो गरीब हुकूमत को चाहिए। मेहरबानी। Over time, I developed a great team, and I'm deeply grateful to them for all the support that they lend to this work, and I hope that they will continue on this journey. It was deeply humbling, it was profoundly humbling, and it was an enormous privilege to be tasked with this responsibility to conceptualize and then subsequently oversee the implementation of Ehsaas, which was a program which touched lives deeply. It was a profoundly humbling experience. And what I'm proud of the most is that we were able to insulate these operations from political interference and from political exploitation and from elite capture, which has been quite traditional for social protection operations, not just in Pakistan, but I would say in many parts of the world. Ehsaas 2047 is a very important goal. It is a goal which will ensure social protection for all by 2047, and perhaps even earlier. Ehsaas was a long-term plan. It cascaded into implementation with integrity. It achieved a lot on a fast-track basis in a short period of 3.5 years. It demonstrated on ground what can be achieved with good intentions, hard work, and no conflict of interest. And it is important that we stay on course and go forward on this journey. The people of Pakistan demand this from us. The people of Pakistan deserve this, and we must serve them with dignity and respect.